Vanakkam, Namaste, Sasrikal, pranams to everyone. Glad that I got this opportunity to host today's session. WWW. Many know that it is World Wide Web, but our very own Shafali ma'am's version would be Woman with Wings. Yes, we all are living with a purpose and flying in heights. Purpose to help our fellow members and, of course, moving ahead in our lives. William Cowper had quoted this: the only true happiness comes from squandering ourselves for a purpose. And to be happy, you should have freedom. And most essential freedom is the freedom to choose. No matter how bad a situation is, you can always choose how to respond to it. People can annoy you, but it is up to you to whether to react or not. Woman with Wings is doing its best to achieve this goal. And it's my version, that is G3's version. Woman with Wings. And the wings are warm hearted, impeachable, negotiated, grateful, and soulful. First, you should find your talents. Second, you should use them to the fullest. This line would perfectly match with our today's moderator, squadron leader Dimple Rawat ji, an air warrior, great influencer, multiple award winner, a splendid example for a leader, and of course, a passionate professional. She is an HR professional, our advisory board member of Women with Wings, and a council member of Women Indian Chamber of Commerce and Industry, and of course, the WICCI UP HR Council. Happiness depends upon ourselves, so choose the best and move ahead in our life. Jai Hind, Mamji, over to you. Thank you. Thank you, Gayatri, for such a wonderful introduction of Women with Wing and mine. Thank you so much. Indeed, Women with Wing has become an integral part of our lives. Women with Wing is a platform which is for the women, made by the empowered women, and the motto and the aim of this platform is to encourage, inspire, and empower women. So every week, we bring to you a unique story of an empowered woman. And in continuation to that, today it's my privilege and honor to bring in front of you very esteemed, prestigious officer of, IPS officer Aparna Gautam. So Aparna, a warm welcome to you. Aparna is an epitome of courage, self confidence, self love, and a lot of success. How she has got this success today, we'll talk about it. So it's my honor and privilege totally to be moderating this session today for you, Aparna. Her introduction: she is from Rampur, UP, and she has been brought up by her mother, powerful, wonderful woman, and who has already accomplished in her time. You know, she was the director, highest positioned as a woman, first woman in the district. She acquired that was the director of higher education. And Aparna, it would be our pleasure. We want her also to come on our platform and, speak about her passions and how, she actually raised you both, you and your sister. Aparna is an engineer. She did her engineering from NIT Allahabad. And after that, she worked briefly for an MNC, American MNC. And then she looked for her passion. She chased her dream and she joined IPS. So she has been, posted to different places, different districts in UP, Uttar Pradesh, and she was in Ghaziabad also, and now she is SSP Auria. She is married. Her husband, he's a businessman, and let's talk more about Aparna through this conversation today. So once again, Aparna, warm welcome to you. Thank you, ma'am. It's a privilege and my deepest regards, first of all, to you, being a senior in the uniform services, and also
uh, bringing so many wonderful women together on this platform is really a Herculean task, and only a person who's as large-hearted as you could have accomplished it. And my sincerest thanks to you for giving this opportunity. And it will be my honor and privilege to interact with so many people who have joined us. And maybe I could share some things that will help people. And maybe I'll also get enriched alongside the journey. Definitely, Aparna. Thank you so much for accepting our invitation. Let me tell the audience, she's on duty. She has to go somewhere, but with duty, she is actually, talking to all of us. So let's, utilize this time and actually learn about her journey. So, Aparna, my first question to you is that वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर इंस्पायरिंग जर्नी. आपका बचपन कैसा था? आप कहाँ पे बड़ी हुई? रामपुर आपने बताया, स्कूलिंग, कॉलेज. सो वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर लाइफ, योर चाइल्डहुड. So essentially, I was born and brought up in Uttar Pradesh. Gate बंद करवा दीजिए अभी. I was born and brought up in Uttar Pradesh, and I belong to a city which is called. कल मत करो, मैं कर लूंगी. अरे बंद करो. I belong to a city that is Rampur, and it's a very small city, and not much is expected out of small city people because of inherent lack of opportunities that come residing in that city. I was brought up by my mother, who is a single mother, and the environment at our home was very, very positive and very, very women friendly. Even though we were born out of adversity, there were a lot of problems that we faced while growing up. Uh, Lack of a father being one of them, and still out of that adversity, my mother was a very, very positive influence. And we did our schooling from Rampur itself, and then I cracked the IEEE and I got admitted into an IIT Allahabad, where I studied engineering. Post engineering, I worked in an MNC, which is called ZS Associates, which is one of the biggest pharmaceutical and MNCs in the world. And after working for 1 year, I also applied for the NAM fellowship and I became a NAM fellow, which is legislative assistant to member of parliament. And I got an opportunity to work with some amazing member of parliaments as well. But I couldn't complete the fellowship because I got selected into UPSC thereafter, and I had to join my training. And then in year 2014, I graduated in 2012. In year 2014, I was selected for UPSC civil services. I got an all India rank of 104, and I was selected into the Indian Police Services uh, by luck. And my father, before I was born, used to say कि मैं इसको किरण बेदी बनाऊंगा. I was not born, but he used to say it for my sister because Kiran Bedi was one of the most inspiring women at that time, and every father looked at her and wanted their daughter to be like her. So she said it about my sister that I want her to become like because he did not knew that I am going to come to life. I'm a posthumous child. So he said it for my sister, and very fortunately, in my guts, I knew that I'm going to get into a uniform service, even though IAF was my first preference. But sometimes you know what is going to happen. So I got a premonition about it that I'm going to get into the uniform services, and then I went into the National Police Academy, which is situated in Hyderabad, went through an extremely taxing, physically, mentally, and emotionally draining training. I'm sure ma'am is aware of the training that happens in a uniform service. And after that, I joined my cadre, which is my home cadre, Uttar Pradesh. And since then, I have served in three different cities, one being Ghaziabad, where I was ASP in the training, and then I was the ASP there itself. I worked as an additional SP in Shahjahanpur district,
I headed 14 police stations there, and now I am heading a district. This district is called Oraya, and it is a heartland of dacoits. It has been a heartland of dacoits and a very challenging district to handle. So I'm glad that I have had the opportunity to be here and manage the district on my own. So, Aparna, you are definitely an inspiration for all the girls, women, who want to chase their dreams. So, as you said, the childhood was difficult because, father wasn't there with you and only, mother, Mrs. Preeti Gautam, I would like to take her name here. So, she brought you up. What kind of challenges did you face in your childhood? इसको बंद कर दीजिए। Uh, per se, it's very easy to say anything without having experienced it. Like when we see a person, we do not really look at where they come from and we pass a very quick judgment. And that happens mostly with females, that a judgment is passed on them. And a lot of females who are listening to me would agree. So this is what exactly happened with us. Uh, because there was no paternal figure in the family, my nanny, whom we used to live with, she was also a single mother. So there were just four females residing in the house. The household was a matriarchal household. There was no male. So there were chances that people used to say to us, there's nobody to guide you. There's no anchor, and you might get strayed along the path. You might not achieve what you want to. There are resources which a man can bring, and you might not be able to get those resources. Then Rampur being a very small city, and at that time when I was born 1991, and in that period of 1991 to 2000, when we were just growing up, eve teasing was a very big problem. And my sister and me, we used to travel. My mom gave us the best of opportunities. We learned every single thing that we could. We learned swimming. For a small city like that, learning swimming was a very big Good thing. thing. Like very big thing. Like people used to be amazed कि भाई इनके बच्चे स्विमिंग सीखने जाते हैं, इनकी लड़कियां स्विमिंग सीखने जाती हैं। ये बहुत आश्चर्य का विषय हुआ करता था। But my mom said, I will never let anything hinder any opportunity that comes your way. So she ensured that we got the best of opportunities. And uh, वो जब हम जाते थे वहां पे तो बहुत बार ईव टीजिंग हुई बट हमने मेरी सिस्टर शी इज 1 year elder to me and I don't know who gave her this ज्ञान but she told me if somebody stares at you you stare them back. Wow. That's the only thing she told me. And that was like that is the ज्ञान I give every girl here. Yeah. Don't be afraid if they stare you stare them back. कि पूछो क्यों घूर रहे हो, what's the reason? Confront them, tell them that what you are doing is wrong. And uh, then there was one incident. We used to play badminton also when we were young. So we had badminton rackets in our hands, and we started. Somebody if they groped my sister, and we were very young, in class 3 or 4 perhaps, and he then gave him a good beating. But what we realized that day that we were doing this just outside our colony, and many men from our colony uncles were passing by, and they did not stop even for once and asked, "Beta, kya problem hai? What is the problem? Why are you engaging into a fight with this man who?" Because there is no sympathy. वो उनको लगता है कि हम क्यों पढ़े, वो क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उसको कोई मतलब नहीं है. They want to just ensure कि भाई हम क्यों पढ़े. तो ये छोटी सिटी के challenges थे. छोटी सिटी के और भी challenges थे. People living in Delhi will never understand this, but Times of India एक दिन लेट आता था और हमारी मदर ने हमको आदत दिलाई थी कि अखबार रोज पढ़ना है. You should be abreast as to what is happening around you. You should always be uh, conscious of what is happening around you. You should always know what is happening around you. Your worldview should not be myopic. It should be like you should see the whole picture. You should see the context of what is happening.
तो लग्जरी वो भी थी कि एक दिन हम वेट करते थे कि भाई अगले दिन अब हम पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि तब वो एक अखबार हुआ करता था, वो बहुत पॉपुलर अखबार था। एवरी नाइट लाइट नहीं आती थी, छोटी सी लाइट नहीं आती थी, बट इतनी मम्मी ने हमको रीडिंग का चस्का लगाया था क्योंकि मन करता था पढ़ने के लिए। तो रात को जो ठंडा होता है, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पेट्रोमैन जिसे कहते हैं, हाँ, यस, पेट्रोमैन जला के हम बुक्स पढ़ते थे। और वो हमारा मी टाइम होता था। मतलब लोग कहते हैं कि देयर इज एन एब्सेंस इन योर फैमिली एंड यू माइट नॉट बी एंजॉयिंग द लग्जरीज, बट मी, माय सिस्टर एंड माय मॉम रीडिंग एट नाइट, reading whatever I wanted to read. Good literature. My mom was an English professor, so we had good books at home. Uh, Reading good literature, that was the most quality time that I've ever spent and continue to spend even today. So that was the power. That was the power of womanhood that I experienced, because everyone, each one of us was trying कि भाई तुम आगे बढ़ोगे तो हम आगे बढ़ेंगे. So my mom used to say to me, "देखो बेटा, I am unable to give you dowry," and कंसर्न होते हैं पेरेंट्स के इस टाइप के। तो तुम्हें जो करना है अपने बल पे करना है, तुम कर लोगे तो अच्छे से रहोगे, नहीं कर पाओगे इट्स योर लाइफ योर डेस्टिनी। सो दैट इज वन थिंग दैट प्रोबेबली मोटिवेटेड अस, बिकॉज ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं और लोगों को लगता है कि हमारी पोजीशन पे चैलेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी अभी भी वहीं पर है, इट इज स्टैग्नेंट। ऊपर से शायद डाउरी की बात नहीं होगी, ऊपर से शायद रेप की बात नहीं होगी, ऊपर से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात नहीं होगी, बट अंडर करंट आज भी वही है, आज भी वही अंडर करंट है। और दिस इज आवर चैलेंज, दिस इज द नेक्स्ट चैलेंज, कि हिपोक्रेसी अंडर करंट है ये, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू एड्रेस। अपर्णा, आपकी बात सुन के मतलब गूज़बम्प आ रहे हैं मेरे तो पूरे हाथों में। और बिफोर आई आस्क यू थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट आई वुड लाइक टू सल्यूट योर मदर ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन विद विंग्स प्लेटफॉर्म। रियली, आप मतलब एक बोलते हैं कि जो बेटी होती है वो बिल्कुल माँ की परछाई होती है, उन्हीं की शक्ति आपके अंदर आई, आई वुड से। And now, I think I would like to also thank all the audience. इतने अच्छे comments आ रहे हैं, शायद आप भी पढ़ पा रहे होंगे। Salute to your mother and very inspiring mother. So thank you so much, audience. Please keep showering your blessings or your comments on us, and we will definitely be asking your questions also to Aparna. So Aparna, third question, what I want to ask you is, like, somebody when they asked me what was my motivation to join Indian Air Force. So in 1997, when I was in third year or fourth year of my engineering, so that time I saw one photograph of a woman officer in uniform. That actually fascinated me to join Indian Air Force. And those days we didn't have actually much girls in Air Force or defense forces, and that was trigger for me. So just want to know, as you said, your father always wanted one of you to become Kiran Bedi. So how did that actually kept you motivated? या वो कहाँ से thought आपको दोबारा आया कि मुझे किरण बेदी ही बनना है? What trigger So per se, my mom got selected into the civil service. That's another story which I like to share. In 1985, she had 5 brothers and 2 sisters. And 4 brothers were preparing for civil service, and my mom was the only girl who was preparing for civil service. None of the brothers qualified, and she stayed in Rampur and she qualified. And then she was told when she got selected in civil service in 1985 when she was selected. तब उनको बताया गया कि तुम कहाँ जाओगी, बाहर कैसे जॉब करोगी, लेक्चर की जॉब ले लो, बच्चे भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो उन्होंने सिविल सर्विस की जॉब छोड़ी, शी गॉट सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप। उसके बाद उन्होंने अपर्णा, आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का इश्यू है? I don't think so. अभी तक तो वही नेटवर्क का है। ऑडियो नाउ अभी तक बिल्कुल ठीक था, बस आई थिंक ये 5-6 सेकेंड्स में ये कुछ प्रॉब्लम आया है। आई कैन रीड फ्रॉम द ऑडियंस साइड ऑल्सो।
Let's try once again. हॉटस्पॉट दो अपना. आपका फोटो का क्वालिटी भी थोड़ा सा खराब हो रहा है. या इट इज नाउ मोर क्लियर. नो, इट्स गोइंग अगेन. शिफाली, लिंक पर आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच. सो जब तक अपर्णा दोबारा आती हैं, मेरा अपर्णा के साथ 2-3 दिनों से काफी अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है एंड आई एम रियली बिग फैन ऑफ हर. अभी हम इस कन्वर्सेशन में बहुत सारी उनसे बातें करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ की भी बातें करेंगे और उनकी मैरिज के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से उनकी मैरिज वाज टोटली डिफरेंट एंड किस तरह से वो काम करती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की वो एक मिसाल है. सो जब मैं उनसे बात कर रही थी, वो किस तरह से एनजीओज को सपोर्ट करती हैं जो वुमेन के लिए काम करती है. उनके थाने के पास ही एनजीओज हैं. सो ये क्वेश्चन भी हम उनसे भी पूछेंगे जैसे ही वो आती हैं वापस. सो आई थिंक आई कैन जस्ट सी हर कमिंग बैक. सो एकदम पावर आज सेशन पावर पैक सेशन होने वाला है. ऑडियंस, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कीप पुटिंग योर कमेंट सो दैट आई कैन आस्क हर क्वेश्चंस. I think Aparna. So Women with Wings. Women with Wings का motto, every woman count. Women with Wings में अभी we have already started so many verticals. अभी हम हेल्थ वर्टिकल भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, फिटनेस वर्टिकल भी स्टार्ट करने का हमने पूरा प्लान कर रखा है. बहुत सारी आने वाले टाइम पे आप देखेंगे वुमेन विद विंग्स के विंग्स फैलाते हुए, और इसमें वी नीड योर सपोर्ट because every woman count for us. Please give your suggestion. Visit our website. Women with Wing की वेबसाइट है जिसे हमने पिछले संडे को लॉन्च किया था और आप उसकी रिकॉर्डिंग भी जाके देख सकते हैं. Every week we bring a story of unique women, her struggles, her self-confidence, her self-love. This is a new word which I have learned during this pandemic. We talk a lot about women, being in self-love with themselves. It is very important that they need to actually, take care of themselves. So this is what. Oh, so now Aparna is back. So Aparna, मैं आपके बारे में ही अभी तक इनसे बात कर रही थी. So quickly, our audience would like to know what was the trigger, other than कि आपके father तो चाहते ही थे कि आप किरण बेदी बने, but आपको कहाँ से लगा कि आपको किरण बेदी बनना है? Public service is something that always fascinated me, uh, and I always wanted to get into a direct contact with public. Of course, when you are young, you're very impressionable, and you get a feeling of कि भाई सब लोग MNC में जॉब कर रहे हैं, सब लोग हाई पैकेज में जॉब कर रहे हैं. You also you stray for some time, but you come back to where you start. So when I joined college, I was very clear that graduation, because it's a necessary requirement in civil services, so I'll do my graduation. I was good in studies, so engineering was a natural choice for me. And post that, I joined an MNC because I was the first person of my batch to get placed into that MNC, and it was a very prestigious job offer. And so I said, I've cracked it now. So let me enjoy the fruits of my hard work. And I worked in that MNC for 1 year. And then again, because I was like, मैं शायद डायरेक्टली यहाँ पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. मैं डायरेक्ट, ऑफ कोर्स हर लोग जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ही करते हैं, बट एक डायरेक्ट इंटरफेस शायद नहीं मिल रहा है मुझे. वो मुझे लगा कि पब्लिक सर्विस में आकर ही मिल सकता है. एंड मोटिवेशन मॉम की वजह से शुरू से था, वो रिकिंडल हुआ उसके बाद में, बिकॉज जॉब के टाइम पे मैं सोचती थी कि यार मैं एक्सेल पे काम कर रही हूँ, मैं इस पे काम कर रही हूँ, लेकिन वो जो बेचारा खड़ा हुआ है उसको मैं हेल्प नहीं कर पाई. रोड पे है, मैं उसको नहीं हेल्प कर पाई. एवरी डे दिस थॉट यूज्ड टू कीप गोइंग इन माय माइंड. वन डे आई डिसाइडेड कि आई हैव क्रैक्ड द जॉब कोड. It's fine, I can get a job for myself. This is something that I've accomplished. Now let me pursue what I want. And then I quit my job, and then I started preparing for civil services. I gave an attempt. Fortunately, I cleared the first attempt I gave.
तो बहुत से फिर जर्नी था. No, great. Thank you. Just want to know how was your training? Like in Air Force, we have a comprehensive training, physical fitness training. सुबह 4 बजे से हमारी परेड स्टार्ट हो जाती थी. पहले पीटी, then parade, then academic classes till 5 o'clock. Again, we used to have some trainings. So for you, how was this training of IPS? Uh, National Police Academy is one of the most prestigious academies in the country, and I'm proud, very very proud that I have trained there. It changed my life being trained there, and I'll tell you very small reasons of why it happened. We had a very very rigorous schedule there. There was a very, I won't say a strict environment, a very disciplined environment, and we were trained to never say no to something. That was what we were trained to. It was not कि 15 किलोमीटर दौड़ना है, it was not कि 40 किलोमीटर की रूट मार्च करनी है, it was never कि स्विमिंग नहीं आती फिर भी स्विमिंग करनी है, वो नहीं था. उन्होंने हमें बस एक चीज सिखाई कि कोई चैलेंज आ जाए तो नो नहीं बोलना है. आप धीरे 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 उसको मास्टर कर सकते हो. Like I was a very bulky child since childhood. मैं bulky थी. I had weight issues. I was called Bolu in my family. बोलू बोलू थी मैं हमेशा से. So रनिंग कभी की नहीं थी. एथलेटिक थी. आई एम सेइंग कि आई वाज एथलेटिक. अच्छा लगता था मुझे स्पोर्ट्स खेलना. बास्केटबॉल भी खेलती सब कुछ खेलती थी बट कभी रनिंग नहीं की. एंड एनपीए में गए तो पता चला कि यहाँ तो केवल एक काम है, दौड़ना तो है ही. मतलब अच्छा मैंडेटरी जॉब, खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट दौड़ना आना चाहिए आपको. तो आता नहीं था और इंजरी हो गई और तब लगा कि बस अब गिव अप करने का टाइम आ गया है. एंड माय डीआई वाज फ्रॉम बीएसएफ एंड he used to say just one thing to me, madam mana nahi karna hai. He was Rajasthani, so you can imagine the accent he used to say it with. mana nahi karna hai, थकना नहीं है आपको. तो जैसे मैं बोलूं सर अब मुझसे नहीं हो सकता. Like we used to have 12 किलोमीटर runs on Sunday Saturdays. तो मैं 10 किलोमीटर का मुझसे नहीं होगा सर, नहीं होगा. अब आई एम अबाउट टू गिव अप. थकना नहीं है मैडम, थकना नहीं है. दौड़ा पैर से नहीं जाता है, दौड़ा यहाँ से जाता है. यहाँ से दौड़िए. से टू मी कि माइंड से दौड़िए. तो वो मुझे तब लगा कि फिजिकल कैपेसिटी डेफिनेटली आप धीरे धीरे बिल्ड करते हो, लेकिन अगर आपने मन से कैपेसिटी, अपनी मेंटल कैपेसिटी बिल्ड नहीं करी तो वो आप काम कभी नहीं कर सकते. और नेशनल पुलिस अकेडमी ने यही पर्सपेक्टिव चेंज किया मेरा कि अगर कोई भी काम आपने आज तक नहीं किया हो वो भी आप कर सकते हो अगर आप डिटरमिन कर लो कि आप करना चाहते हो. Absolutely. Without determination, nothing is possible. And that was the biggest lesson that NPA gave me. And जब आप 40 किलोमीटर की रूट मार्च करके आते हो या 16 किलोमीटर की रन टाइम में पूरी करके आते हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है, nobody can beat that. और वही कॉन्फिडेंस आता है जब हम लॉ ऑर्डर सिचुएशन में खड़े होते हैं, पब्लिक के घेर के हमको खड़ी होती है, तब हमको लगता है नहीं यार, जब वो कर ले तो ये भी कर लेंगे. सब कर सकते हैं क्योंकि अगर चाहेंगे तो कर लेंगे. So that was one takeaway. So I think Aparna, I can just relate with your training, and same we used to be told that mind control your body. You are running, from your mind, not your body. Body can give up, but mind, if mind is powerful, you will never give up. इनफैक्ट आज तो बस ऐसा हो गया कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है. मुझे अपना ट्रेनिंग याद आ रही है कि राइफल लेके दौड़ते रहते थे हम लोग. सो ग्रेट. So Aparna, next question is about your role. You are SSP of Oria, and how are you functioning? What is your routine? आपके team कैसे function करती है? So do you have a women's cell also? This was a question, and I will also come to DK Bakshi sir's question. And how does this women's cell work in your thana? So this our audience wants to know. So coincidentally, because I was traveling, I had to halt at a thana only. So I'm sitting at one of my thanas, and I will show you the women help desk that the UP government has made. Excellent thing, and I will show it to you because I'm sitting in a thana, so I can physically show it to everyone so that they can appreciate everything. Being in the police services, there is no routine.
because it's a 24/7 job. Crime and law and order can happen at any moment. So we do not have a fixed per se job hours, and that's one of the biggest challenges of working in the police service. We cannot shut off at 5. If you want to shut down at 9 o'clock in the night, we're very tired. 10 o'clock, some incident happens, we have to rush to it. We don't have an option to say no, I won't go, I'm very tired. So that's the job of the police. Being the SP of the district, you are commanding a lot of men and women. I have around 3,000 men and women under me. Inspectors, I have 22 inspectors that I command. I have 120 sub-inspectors that I command, and constabulary is another figure. So you have to work at a lot of different levels. Police works on a lot of different levels. You have to have a good public interaction. Second, you need to see that criminals are put behind bars and you have to take very strong decisions. Third biggest challenge in police is ensuring that your personnel are their welfare is taken care of. Fourth, most important thing, crime law is a very gray area, very gray area, and your ethics and what you have learned throughout your life experiences, modulate a lot of how you respond to situations. And you have to be very fair, you have to be very accountable to the public that you answer to. सबसे पहले I see a question which I'm going to come to. Do you feel insubordination? Rajni ji has I, just I'll come to that as well. So my daily routine starts like this. I have to brief my seniors at around 8 to 8, between 8 to 8:30. I have to brief my seniors of what has happened in the previous day. So my day has to start at 7:30 because I have to study first in the morning of what has happened and then brief them accordingly. Then we have Junction wise from 10 to 2. So 10 to 2, I sit in my police office where I directly interact with public. Public आती है, हमें अपनी समस्या बताती है, हम उसका निदान करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेना होता है, करेक्टिव एक्शन लेते हैं. उसके बाद थाने पे काम होता है हमारा. थाने पे काम होता है फॉर एग्जांपल रिलेशन इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको मॉनिटर करना. बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन लेना ताकि वो लोग क्राइम न कर पाए. यू कैन प्रिवेंट क्राइम फ्रॉम हैपनिंग. Then we also have to engage in a lot of public related activities so that the public gets a good interface with police, be it through the Apar Mandal, be it through women health groups, be it through Jan Prathinidhi के माध्यम से भी हम लोग करते हैं. Typical day, then I have my camp office, which is my residence. So I have no residence per se. I have a camp office, and that's where I also sleep. So in police, you don't have a residence; you have a camp office because you're working 24/7. So they have assumed that do you have a camp office? I have a camp office. I sit in my camp office. Mostly, if I have to take a round or I have to do some inspections, I do it in the evening because that's the free time I get. Suppose that I sit in my office from 8 o'clock and depends on the work schedule, 8 to 10, 8 to 12 हो ही जाता है. Saturday, Sundays, we mostly do rounds and checkings in the night because अगले दिन ऑफिस जाने का इतना कोई प्रेशर नहीं होता है. तो ये हमारा शेड्यूल रहता है. no Saturday off for you. No, there is no Sunday off. So last Sunday was the busiest day of my week. Last Okay. Sunday was the busiest day of my week because Yes, there yeah, was yesterday, right? Elections and all. Right. Right. Aparna, I just want to know about Mahila Thane. So, first Mahila Thana, it was inaugurated in Kerala by Mrs. Indira Gandhi in 1973. And as on today, after 45 years, we have only 479 Mahila Thane. So, do you think that government should do something, or there is a need to increase Mahila Thanas? Because we have also seen the trend. Survey says that around 21% more complain
have been registered after we have actually had the Mahila Thanas in the districts. So I think Aparna, we have lost her. She'll be back soon. Yes, she's it here. So Aparna, my question is about महिला थाना कि उनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या पुलिस की तरफ से भी आप कुछ कदम ले रहे हैं? और क्या आप गवर्नमेंट से ये अपनी डिमांड रखते हैं कि महिला थाना ज्यादा होने चाहिए? बिकॉज आज की डेट में यू हैव ओनली 479 महिला थानास. So in UP police, we have Mahila Thana, one Mahila Thana in each district. And अब जैसे कि नीड हमको लगा कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स ज्योग्राफिकली बहुत बड़े होते हैं, तो जो हमारी दूरस्थ की तहसील है वहाँ पे हमने एक महिला रिपोर्टिंग चौकी बनाई है that women don't have to travel so far for the single Mahila Thana that is in the district. Okay. The UP government, the first government to launch such an initiative. In every Thana of mine, we have a Mahila help desk. I'll show you the Mahila help desk in some time. It's just 50 meters away from where I'm sitting right now. तो महिला हेल्प डेस्क है हमारे यहाँ, और महिला हेल्प डेस्क में महिला कांस्टेबल्स ही बैठती हैं, महिला आरक्षी बैठती हैं, एंड दे लिसन टू ईच एंड एवरी फीमेल दैट कम्स टू द थाना. महिला डेस्क जो बनाई गई है, इट इज सिचुएटेड एट दैट प्लेस इन द थाना व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द गेट, दैट द फीमेल हु इज कमिंग टू द थाना डज नॉट फील कि मुझे थाने में अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज थाना एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल जगह सोसाइटी में मानी जाती है, थाने नहीं जाएंगे हम लोग. सो बाहर की तरफ हमने रखा है महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क को, वहाँ महिला कांस्टेबल्स ही बैठती हैं. There is a mandatory receipt that is given to every single woman who comes with a complaint. सबको एक रसीद दी जाती है कि आप यहाँ आए थे, आपने कंप्लेंट बताइए क्या बात है. फिर हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म है. 100% feedback of every female complaint is taken. Till she is not satisfied, we keep escalating it to the next level. For example, if she is not satisfied with the Thana, we escalate it to the circle officer's level. If she's not happy with the circle officer's action, we take it at once up to the additional SP, and then she comes to me. Of course, everyone can directly come to me. I sit in my office for from 10 to 2. But Mahila help desks are working excellently in UP. And if you get a survey done of UP, पुलिस का परसेप्शन जनरली नेगेटिव ही लोगों के दिमाग में होता है. बट महिला हेल्प डेस्क में बहुत सारी महिलाएं आती हैं और उनको पता है कि दीदी बैठी है, महिला कांस्टेबल ने कहा दीदी करो, वो बोलती भी वही है, वो मुझे भी दीदी बोलती है. Nobody calls me an SP here. Especially the females are very happy seeing a lady SP here because they can come into my chamber anytime, they can tell me anything. So they are दीदी आप ही करिएगा, आपको करना है ये मेरा काम. So with that authority, they go to a Mahila help desk, and when they go to the Mahila help desk, they say दीदी आप मेरा करवा दो ये काम. In my district, as an initiative, I have started something called the Mahila Suraksha Samiti. This committee made in every थाना, जो वहाँ की बढ़िया महिलाएं हैं जो थाने में हेल्प करती हैं, काउंसलर्स के रूप में हमारे काम करती हैं, मीडिएटर्स के रूप में काम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिड डिस्प्यूट, तो डायरेक्टली पुलिस इन्वॉल्व होती है तो चीजें खराब होती हैं, बिकॉज एक बार थाने में आ गई बात तो फिर वो थोड़ा सोसाइटी उसको अजब तरीके से लेती है. तो वी हैव समथिंग कॉल्ड महिला सुरक्षा समिति. They carry a badge that I've got made for them. There's a big badge that they put. वो जिस मोहल्ले में होती है, यदि महिलाओं की समस्या होती है, वो डायरेक्टली थाने नहीं आना चाहती है, वो उस महिला सुरक्षा समिति के मेंबर को अप्रोच करती है. वो महिला सुरक्षा समिति की मेंबर वहाँ जज करती है. हमारे महिला हेल्प डेस्क में वो आती हैं, वो काउंसलिंग लेती है कि क्या इसको अभी पुलिस हेल्प की जरूरत है, क्या ये मैटर, क्योंकि डोमेस्टिक मैटर है कि घर पे हम सॉल्व करा सकते हैं. वी काउंसिल देम. हमको लगता है कि नहीं, आप अभी बिठाकर उनकी बातचीत कराओ, महिला पत्नी का मैटर है वो सॉल्व हो सकता है. They get it solved on their end, and then if they think it's getting out of their hands, then the महिला सुरक्षा समिति का जो मेंबर होती है, they come to us and they report it to the थाना, और थाना फिर उसको टेक केयर करता है. महिला सुरक्षा समिति के माध्यम से we have done one more thing, which we have replicated in 2 thanas. I have 10 thanas under me. One is a Mahila Thana, so total 11 thanas. But in 2 thanas we have replicated this. जहाँ जहाँ बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी या कोचिंग जाती थी या स्कूल थे उनके,
हमने वहाँ सीसीटीवी कैमराज, महिला सुरक्षा समिति और जन सहयोग से वहाँ लगवाए हैं, so that अरे the problem of teasing gets solved, because once you are under surveillance you will never do such kind of a thing. जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, the main intersections of the place, near schools, where there are not schools per se, because school के सामने कोई teasing नहीं करेगा, personal experience है. एली जो होती है, जो स्कूल के पीछे गेट होते हैं, teasing वहाँ होती है. तो हमने वहां पर कैमरा इंस्टॉल कराए हैं, सो दैट लोगों को एक रहे कि भाई अब हम वॉच में है, यहाँ ये चीजें नहीं कर सकते. The question I see, the question I see from one of the people, women are afraid to enter the thana. Ma'am, specifically for that reason only, Mahila help desk has been situated outside the thana, so that they don't have to enter. पहले ही वो एक महिला कांस्टेबल से इंटरेक्ट कर कंफर्टेबल हो जाए, अपनी समस्या बता दें. That's the reason we in UP, every thana in UP under the guidance of the UP government has a Mahila help desk. It is totally computerized. Totally, each and everything is computerized. So in fact, Aparna, I would wish कि आपकी पोस्टिंग जल्दी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आए और आप ये मॉडल को रेप्लिकेट करें, क्योंकि मतलब इट इज एक्चुअली इनोवेटिव अप्रोच जो आपने किया है, और इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू ऑल द गर्ल्स. अभी ट्यूशन भी बच्चे लड़कियां नहीं जाती बिकॉज ऑफ ईव टीजिंग या कुछ और भी उनको जो रीजन लगता है कि कोई रास्ते में मिलेगा, हमें देखेगा. तो हमें आई थिंक आपके जैसे पुलिस इंस्पेक्टर्स की और आईपीएस से और आईपीएस वुमेन की जरूरत है. तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड है प्रतिभा राय, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे दिया है आपसे पूछने के लिए. As we know that 45% of Indian population is women, but police, police is only 7%. 7% total police women contribute the total police. And if you see this, distribution in the states, Assam has only 0.93% of women police, and Nagaland has only 1.05% of women police. So इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको आप लोग पुलिस वाले कैसे देखते हैं? क्योंकि एक अपर्णा के ही इस डिस्ट्रिक्ट में आने से इतना फर्क पड़ गया है, तो अगर हमें और पुलिस इंस्पेक्टर्स आपकी तरह मिल जाए तो डेफिनेटली देश का पूरा भला होगा. तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? See, I'm of a very specific opinion that police comes from society itself. जो society की हालत है वही पुलिस की हालत है. Yes, we have a 45% of population, but women workforce in every vertical is less. Police essentially was, there are some jobs which are called pink jobs, like you must be knowing. Beauty parlor pink job बोला जाता है, मैनेजर बनना pink job बोला जाता है, अकाउंटेंट बनना pink job है, because घर पे बैठ के काम करना है, अकाउंटेंट मतलब भागा दौड़ी नहीं करनी है. ट्रेडिशनली पुलिस का जॉब मेल सेंट्रिक माना गया था, बट अब रियलाइज हो रहा है कि भाई जब 50% पॉपुलेशन हमारी हमसे केटर करनी है, तो उनके लिए उस पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ बिठाना ही पड़ेगा. बहुत सारे स्टेट्स ने इसमें चेंज किया है. यूपी इज अ लीडिंग एग्जांपल. यूपी पुलिस इज अ लीडिंग एग्जांपल. We have more than I don't know the percentage, but I can tell you in my thana, if there are for example 100 constables, then we have around 20 to 25 constables, which is a huge number. It might not appear to be a big number. It might not appear to be a big number, but we started from 2 Mahila constables like 10 years back. We now have so many. We have Mahila sub-inspectors who are leading. One of my chowki in charges, there was no female chowki in charge when I come to do district. मतलब outpost in charge female नहीं थी, इतनी opportunity नहीं थी. I saw one of them as she was working very hard. I said, I'm going to back you. You become a chowki in charge. You do the running around, and you never have to complain to make it from female if you नहीं कर सकते. That's the only condition that I put. Gender should not become a hindrance. If you are able to work hard, you don't know anything, I'll support you. But so women पुलिस में आ रही हैं, लेकिन क्योंकि देखिए सोसाइटी को इवॉल्व होने में टाइम लगता है. तो हम आज नहीं सोच सकते कि बस आज हम क्रांति ला देंगे
तो विमेन एम्पावरमेंट आ जाएगा। ये जिसकी भी सोच है बहुत गलत सोच है। क्रांति से विमेन एम्पावरमेंट नहीं आएगा। विमेन एम्पावरमेंट धीरे धीरे होता है। एक फीमेल को दूसरी फीमेल अगर सपोर्ट नहीं करती है तो आप विमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट काम करते हो, और वही फीमेल अगर उस फीमेल को सपोर्ट कर देती है तो आप विमेन एम्पावरमेंट के फॉर्म फॉर काम करते हो। बहुत सारी डोमेस्टिक हेल्थ में जो पिट के आती हैं अपने पति से, और आप ही लोगों के घर में काम करती हैं, हम जैसे लोग घर में काम करती हैं, बट हम कभी उनको नहीं बोल पाते कि तो हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, तुम बेटा लड़ो, वो कभी नहीं बोल पाते हैं। That's our basic problem. So Absolutely. that is something we need to address. Women empowerment आज एकदम से नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे करके आएगा। लोग सोचते हैं अरे विमेन के साथ रेप हो रहे हैं। यस, रेप हो रहे हैं, आई एग्री, रेप हो रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी इज एट अ क्रूसिबल मोमेंट। क्रूसिबल मोमेंट है, चर्न हो रही है सोसाइटी। उन्होंने कभी देखी नहीं महिला बाहर आती हुई, उन्होंने कभी देखी नहीं घूंघट के बाहर महिला, उनको नहीं समझ में आ रहा कैसे हैंडल करें। विमेन को बताना पड़ेगा ना कि तुम मुझको घूरोगे तो मैं तुमको घूरूंगी, तुम मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं जवाब दूंगी। बहुत सारी फीमेल्स हैं, मुझे खुद पता है, मेरी फ्रेंड्स है, मैं खुद, आई एम नॉट सेइंग आई एम समथिंग डिफरेंट। टीजिंग होती है, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, हम कहते हैं चल छोड़ना, कौन कंप्लेंट करेगा। यही चल छोड़ना जब वो 4 लड़कियों के साथ करता है लड़का, तब उसको लगता है यार सब लड़कियां ऐसी होती हैं, ये तो कुछ बोलेंगी नहीं, मैं रेप भी कर देता हूँ, ये कुछ नहीं बोलेंगी। So the moment you stop speaking, that is why when I conduct women चौपाल, मैं गांव में महिला चौपाल लगाती हूँ। यहाँ पे मेरी महिला कांस्टेबल जाती है, मैं नहीं जाती हर जगह। मेरी महिला कांस्टेबल बहुत एडेप्ट है, बहुत एम्पावर्ड है, वो जाती है और बताती है, कहती है अगर छोटी छिड़खानी भी हो ना तो उसको बताओ। तो लड़का रोज जाते टाइम सॉन्ग गाता है तुम्हारे पीछे, तुम्हें फोन पे गंदे मैसेज करता है, बताओ हमको। नहीं बताओगे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो फिर और क्राइम प्रोन होगा। उसको लगेगा कि नहीं, कोई डिटरेंस ही नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं डांट रहा। सो सोसाइटी में भी यही है, पुलिस में भी यही है, धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, एंड आई मस्ट से फॉर द बेटर चेंज हो रही है। बहुत सारी, एक किरण बेदी मैम थी, आज बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स आईपीएस में, एंड बाय चॉइस हैं। देयर आर लॉट ऑफ माय बैचमेट्स हु आर बाय चॉइस। So things are changing. We have to be patient and we have to be a contributing factor. We cannot be a WhatsApp critique. We cannot keep criticizing everything on WhatsApp कि अरे बड़ा देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। जब हमको डस्टबिन नहीं मिलता है तो हम कूड़ा फेंकते हैं, तब हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं गंदगी में, लेकिन WhatsApp पे सबको क्रिटिसाइज करना है। So that's the problem we face, and that's something we need to address. You have to be part of the solution. You cannot keep pointing out the problems all the time. Absolutely. That is something. No, absolutely, Panda. No, you rightly said. And I would like to tell everybody that Women with Wings is that platform which is actually a true example of women empowerment. Here we all collaborate, we don't compete with each other. So, Aparna, as we were talking yesterday, I really liked your idea of women empowerment, that without men, we are incomplete. I mean, we cannot be empowered without men in our life. Maybe it's father, brother, our spouse, our friends, team members. So we were talking yesterday that like DK Bakshi sir ने अभी यहाँ पे उनका comment आया था कि he is also very very pro women movement, and he does a lot of work on women empowerment. So yesterday we were talking role of men in women empowerment. So I just would like to know your views. जो barriers थे वो आपने बता दिए, उन्हें कैसे दूर करना है वो भी आपने बता दिया. But what would be the role of men in empowering women? मैं बहुत एक्सटेंसिवली गांव जाके महिलाओं से बात करती हूँ। मेरी महिला कांस्टेबल्स, मेरी महिला एसआई जाके बात करती हूँ। हम गांव में केवल फीमेल से बात नहीं करते, हम 18 से 20 साल के लड़के होते हैं, जो अनमैरिड लड़के होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। बिकॉज मुझे एक बात समझ में आई पुलिस में देख के कि पीड़ित का कोई जेंडर नहीं होता, पीड़ित कोई भी हो सकता है। फीमेल्स हिस्टोरिकली पीड़ित रही हैं तो हमको उनका संख्या ज्यादा दिखता है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक मेन एसेंशियल कॉन्वर्सेशन का, उस डायलॉग का पार्ट ना बने। देयर वर 3 waves of feminism, जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी वो जानते हैं। देयर हैव बीन 3 waves of feminism, and the third wave of feminism was the most critical phase
wave of feminism, उसने कहा कि we don't need men at all. We are competent enough. Women are competent enough. That's the wrong notion of women empowerment. I personally feel that you have to understand that everyone is unique because of their capabilities. Women have certain capabilities, they're unique because of that. Men have certain capabilities, they're unique because of that. And uh, जो मेन है उनको ये समझना होगा कि उनका काम उस कैपेबिलिटी को उभारना है, तो दबाना नहीं है. जब हम जाते हैं तो हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि भैया तुम जिस लड़की को छेड़ रहे हो, तुम्हारी बहन भी छेड़ी जा सकती है, और तुम्हारी बहन अगर उस प्रताड़ना में कोई गलत कदम उठा ले तो तुम भी सफर करोगे. तो उस तरीके से उनको सेंसिटाइज करते हैं, तो उनको बात समझ में आती है कि नहीं भाई, हमारे जो लिमिटेशंस हैं हम लीगली तरीके से ही विमेन को अप्रोच करें, हम गलत तरीके से अप्रोच ना करें. तो विमेन को एम्पावर करने के लिए उनके बाप, उनके भाई, उनको समझना होगा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली कि भाई उनका सबसे ज्यादा एक्टिव रोल है. अगर वो रोक देंगे तो मदर नहीं बोल पाएगी. और हर मदर लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं रखती घर में, वो लड़ के अपने बच्चों के लिए कुछ या अपने बच्चों के लिए कुछ हासिल करे. मैन को समझना होगा कि उनको अपने बच्चों को आगे करना है. जब मैं बच्चियों से बात करती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ, देयर इज आल्सो अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग इन पुलिस. गलत तरीके से रेप में फंसा देना, गलत तरीके से छेड़खानी में फंसा देना, ये भी होता है. कोई रंजिश है, उसने कह देना कि हमारे साथ रेप कर दिया, जबकि रंजिश जमीनी विवाद को लेकर है. तो हम उन महिलाओं को भी ये समझाते हैं कि आपकी गलत रिपोर्टिंग से तो निर्दोष आदमी जेल चला जाएगा. तो वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मेन को अंदर लाने का, क्योंकि मेन, ये एक नया चीज आ रहा है. विमेन एम्पावरमेंट आज पुलिस में इतना है क्योंकि सुनी जा रही है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% है, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक यथार्थ है कि फॉल्स कंप्लेंट भी आती है, गलत कंप्लेंट भी महिलाएं कर रही हैं और उससे निर्दोष लोग जेल जा रहे हैं. तो मेन और एंटेगनाइज फील होते हैं कि भाई ये तो कुछ भी आरोप लगा देती है. तो उन महिलाओं को हम बताते हैं कि भाई आप गलत मत बोलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है. और अगर जैसे वो होता है ना जो भेड़िया, जिसने वो एक लड़का था जिसने बोला कि द मैन हु क्राइड वुल्फ. So if you keep on repeating, if the women keep on repeating, or a lot of women keep on false reporting, the sensitivity in the police personnel also get reduced. ये मैंने खुद देखा है. उनको लगता है ये झूठ बोल रही है, ये वाली भी झूठ बोल रही है, बिकॉज दो जो पहले आए उन्होंने झूठ बोला, तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. तो वो भी भूल जाते हैं कि भाई नहीं यार ये भी झूठी बोल रही है, उसकी जेन्युइन समस्या भी हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं. तो वो हम बताते हैं महिलाओं को जो हम गाँव मिलते हैं कि भाई तुम मत झूठ बोलोगे, कि तुम झूठ बोलोगी तो हमारा विश्वास उस बच्ची से हट जाएगा कि सच बोल रही होगी. तो इट्स अ गेम ऑफ ट्रस्ट. आपको बार बार कोई झूठ बोले तो आप भी उसको कितना दिन आप ह्यूमन बीइंग, हम भी वापस जाके अपने घरों में सोते हैं, टीवी देखते हैं, सब कुछ करते हैं. जिसमें कोई अलग से ब्रीड नहीं पैदा हुई, में डीएनए चेंज नहीं है, वी आर यूनिफॉर्म पर्सनल. बट दैट इज वाई जो विमेन एम्पावरमेंट का रोल है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन के साथ भी इंजस्टिस ना हो. मेन के साथ इंजस्टिस होगा तो गलत फॉर्म में निकलेगा. जैसे महिलाएं हैं डिवोर्स लेने के लिए अपना कुछ फैमिली डिस्प्यूट है, कुछ मैरिटल डिस्प्यूट है, लड़के को हरास कर देती है. मतलब लड़के मुझे आके बोलते हैं मैम मैं क्या मैं डिसाइड कर लूँ. दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन. एंड जो विमेन एम्पावरमेंट चिल्लाते हैं पर से, उनको ये भी देखना है, दिस इज ऑल्सो अ एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. We have to also stop false reporting. We have to also stop there is no abuse of law. So that is the whole holistic picture that we have to get from women empowerment. You should know your capabilities, but you should never misuse your rights. अपनी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने के लिए आप राइट का यूज करिए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. विमेन एम्पावरमेंट में केवल राइट्स की बात हो रही है आजकल, जो मैं देख रही हूँ. द कॉन्वर्सेशन दैट आई एम सीइंग इट्स अबाउट राइट. हमारे को अधिकार दो, हमें ऐसे अधिकार नहीं मिला, हमें बड़ा दमन किया गया. एंड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, उसको भी पूरा करो. राइट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन राइट्स ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड दैट्स द बिगेस्ट मैसेज दैट अ मैन शुड आल्सो गेट. यू हैव अ राइट ऑन अ वुमन, but you have also a responsibility to on a woman as well. Similarly, a man has right on a man, a woman has right on a man, but she also has responsibilities towards them.
अगर ये बैलेंस वो स्ट्राइक कर लेती है तो सोसाइटी की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एब्सोल्युटली अपर्णा, मेरा तो मन कर रहा है मैं आपसे बस बात करते ही जाऊं, इतनी अच्छी अवेयरनेस आज जनता को मिल रही है इस सेशन के थ्रू। और बट टाइम की कमी के कारण आई थिंक लेट मी जस्ट कम टू द रैपिड फायर राउंड फर्स्ट एंड देन वी विल टेक 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, बिकॉज वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले जस्ट आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर इंटरेस्टिंग मैरिज जो हम कल बात कर रहे थे। सो आपके हस्बैंड, ही इज अ बिजनेसमैन एंड योर वीकेंड कपल, he is in Delhi, you are in Auria. So how are you managing or maintaining this balance? So quality time कैसे दे रहे हैं, और थोड़ा सा अपनी मैरिज के बारे में we would like to know. So mine is a love marriage. I chose the guy I wanted to marry, and he has taught me one thing. I was dealing with a very crucial case once, and I was very hesitant as to why should I get into that case. It's very risky to get into that case. So he just told me one thing: if you will not take risks, you will never get rewards. So that's the Absolutely. kind of relationship I enjoy with him, and he always pushes me कि मैं risk नहीं लोगे तो reward कहाँ से मिलेगा? You take that risk, I'm with you. We'll face it. Whatever comes, we'll face it. Uh, Work-life balance as such, because we don't have kids, so we don't feel like a lot of burden right now. So I'm not the right person to answer because अभी chill चल रहा है, we are like chilling. So maybe when the responsibility comes, that's the next stage of evolution. वो जब experience करूंगी शायद तब अच्छे से बता पाऊंगी, अभी तो ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है. So Absolutely. that's it. और जहाँ तक मेरी शादी की बात है, as an IPS officer and civil servant in society, we are expected to do a very extravagant wedding. We are expected कि हम बहुत खुर्रम-खा बन के wedding करेंगे. But we decided to keep it a very intimate, classy, intimate affair. And the money that we saved from not spending on the wedding, we channeled it to 2, 3 initiatives that we wanted to work on. There is an initiative taken in Rishikesh where there are slums there, and वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको बेकरी के लेसन दिए जाते हैं, बेकिंग एंड बेकिंग लेसन्स उनको दिए, हमने स्पॉन्सर भी किया उनको. They are manufacturing their own unit. They have established their own manufacturing unit. Of course, we had the fortunate support of local NGOs there, but that is what something we did. उसके अलावा हमने त्रियुगी नारायण में शादी की थी. वहाँ पे हमने कोई भी काम जो किया वो लोकल हेड से किया. हमने तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हम ये नहीं था कि मेरा दिल्ली कपल डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं तो सारा हम सब कुछ दिल्ली से लेकर जाएंगे. Of course, there were certain essentials which we had to, but other than that, we engaged the local population of that area. Right from a makeup artist, he had not done makeup on anybody except I was the first person she did makeup on, and I got my wedding makeup done from her. इसलिए लोग पता नहीं ब्राइडल के कितने सारे क्लासेस ले लेते हैं. तो मैंने कहा नहीं यार, वो बंदी है, करना चाहती है, young पहाड़ी girl, and she wanted to do it. I said, do it, yaar. I am going to take the risk. It's okay. And I'm going to pay you, but you learn. So I arranged for her beautician classes. She had 5 classes in Rudraprayag district. तो मैंने उसका अरेंज करा, उसने 5 क्लासेस लिया. तो उसने मुझे, I hired her properly. She did my makeup and everything. Then we got into a collaboration with a local NGO of females based out of Dehradun. It's called Nav Jagaran Samiti. Amazing work they are doing, and they arrange for everything. उनकी जो women self help groups हैं, उन्होंने हमारी शादी की सारी स्वीट्स बनाई, सारा खाना बनाया, and we engaged them, all village ladies. Then the local purchase was also made from women farmers. Whatever खाना हमारी शादी में बना या हमारी शादी के फंक्शन में बना, we ensured that it's not sourced from markets. We sourced it from the local farmers of the village. So they were also very happy. Mandua, वहाँ पे एक famous Ragi. आटा होता है, and चितकबरा राजमा बनता है वहाँ पे, बड़ा बड़ा कलरफुल राजमा मिलता है. We all sourced it from them, and गहत की दाल हो गई या जो भी हुआ, learned a lot of things also from there, and we sourced it and we used it. So
people still remember it, and we have made a pledge. We had made a pledge to go to that area once in a year because my schedule does not permit me to leave for a long period of time. But due to the pandemic, हम 2 साल से वहाँ जा नहीं पाए हैं. But I really really long to go because I have 2 3 things pending there. मुझे एक आंगनवाड़ी का भी विकास वहाँ पे करना है. मेरा pending छूटा हुआ है, तो I'll go and do that as well. I can really, relate with it. I am from Uttarakhand. So next time when you come there, I will host you. So all these food items, what you are telling, these are all actually, the staple food of Uttarakhand. And Aparna, there is so much to learn from you. I mean, you take risk, and what we say that it is a selfless service. I mean, every girl has a dream to have a fairy tale kind of a marriage, and but you save that money and you donated that money to the NGOs. आपने बेकरी कोर्स कराया या ब्यूटिशियन उनको लोकली ट्रेन किया उन लड़कियों को जिन्होंने आपका मेकअप किया. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, Aparna. So now, quick round with you. What is your favorite breakfast, Aparna? Sprouts cheetah. Oh wow! What is your stress buster? Netflix. Sometimes I get a chance to watch Netflix, so I watch it. Especially spy movies on Netflix, spy What? series. Is my And I know you are a good singer, so you have to sing one song for our viewers. Any song. actually I have a very bad thought for the past one All good singers week say the that I same things. tried. No. I genuinely have a very I sound like a horse. So, but I'll try to sing. तेरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे अंधियारा है घना और लहू से सना. Awesome. So आज आपके पुलिस थाने वाले भी सब देख रहे हैं आपको, और अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैडम बाहर से इतनी सख्त है और इतना अच्छा गाना भी गाती है मैडम. सो Aparna, एक लाइफ मंत्र तो मुझे आपका पता है जो हम कल बात कर रहे थे कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. व्हाट वी वर टॉकिंग यस्टरडे. कोई और लाइफ मंत्र जो आप फील करती हैं और जो यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस. मेरा एक लाइफ मंत्र है, ईमानदारी बहुत महंगा शौक है, बहुत कम लोग उसको पाल सकते हैं और बहुत बहुत शैलो चीज है. बट द काइंड ऑफ जॉब दैट वी आर इन, being true to the people, being true to the service that you want to do, बहुत एक महंगा शौक है और सोच समझ के पालना चाहिए उसको. So that is one thing I keep saying to my men also. मेरे को बहुत महंगा है ये शौक और ध्यान से रखना क्योंकि बहुत कांटे हैं इसमें. बट उसका मजा ही कुछ और है ना. हम जानते हैं वर्दी में जो है आप हैं, या जब मेरे को भी पता है जब मैं एयरफोर्स में थी, और आज भी वो मेरी फाउंडेशन है कि जो हमारी ईमानदारी और लॉयल्टी या इंटीग्रिटी की बात है वो सबसे ऊपर आती है. थैंक यू सो मच अपर्णा. मैं क्विकली एक दो क्वेश्चंस ले लेती हूँ बिकॉज व्यूअर्स बार बार क्वेश्चंस डाल रहे हैं. सरोजनी जी का एक क्वेश्चन था आपसे कि डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज और डू यू फेस एनी चैलेंज व्हाइल वर्किंग विद द मेल काउंटरपार्ट्स, जो उन्होंने बोला कि कुछ पैरिटी या इनसबऑर्डिनेशन का कुछ कभी कुछ ऐसा फील हुआ आपको? So at the first glance, you are judged. Even when you are an officer, you are judged, and they want to gauge the kind of person you are, and they respond accordingly. If you give them a good hand in the beginning, then they are all set. If you are not clear with what you want in the beginning, they'll take you for a ride, and they feel महिलाओं को क्योंकि इंटरेक्शन उनका ज्यादा कभी रहा नहीं है, so obviously they have a hesitation to speak with you. They have also a hesitation to share things with you. But that is something you have to master. You have to create this gap in their mind. Like I did a 8 kilometer route march for a festival, and one of my male seniors
नॉट सीनियर, जस्ट माय रैंक. He said, अगर मैडम चल सकती हैं तो मैं तो चल ही सकता हूँ. I said, look, you need to get this notion out of your head. I can still walk 8 more kilometers and you won't be able to. You break that first in your mind. So that's the uh, problem we face. We definitely face. I won't say it's a bed of roses की महिला है आप. बहुत से challenges होते हैं. You're not taking that. जब तक बहुत strict नहीं होंगी शायद. You have to constantly prove yourself. So that's one challenge definitely. But my seniors, my female seniors especially, they have been the best field officers. Because they have a sixth sense, women have an inherent sixth sense, they have an inherent compassion. And that's the capability you should play on. You cannot be macho. I cannot go on beating people because that's not my capability. I cannot be a macho because just because that's the job. That is what I keep telling every female. If you will keep competing, you will never beat a person. You Absolutely. cannot compete and beat. You need to hone what you inherently, because that is something no one can beat you in. If you are compassionate, I can bet nobody can be as compassionate as you. If you're hardworking, nobody can beat your hard work. बट अगर तुम बोले तो वो 50 किलो का डेडलिफ्ट कर रहा है तो मैं भी 50 किलो का डेडलिफ्ट करके दिखाऊंगी तभी मेरी फोर्स मुझे रिस्पेक्ट करेगी. ये नहीं. No. आपकी अपनी क्वालिटीज, यू प्ले योर ओन गेम, यू डिसाइड योर ओन टर्फ. So that's what I tell to every female. You have a turf. You need to identify and play on that turf. So that's important. एब्सोल्युटली अपर्णा. सो अपर्णा, एक और क्वेश्चन मेरे पास देवजानी रॉय उन्होंने भेजा है अभी पर्सनल विंडो पे कि शी वांट्स टू नो कि पे पैरिटी इज इट एक्चुअली इज इट पॉसिबल और इट्स रिमेन टू बी अ मिथ. इसके बारे में आप क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? Fortunately, in the government services, there is 100% pay parity. I यस. am paid as much as my male colleagues. My constables are paid as much as their male colleagues. We do not have that problem here, and it's a very very good thing because वो बहुत बड़ा demotivating factor होता है अगर ऐसा होता. So we don't यस. have that problem of pay parity. Uh, they are treated at par as our male counterparts. There is no such concept also. Right, right. So I think now I have already taken 7 minutes extra of yours. So thank you so much. It was wonderful hosting you, and it's our privilege and honor. प्लीज हमें बताइएगा कि वुमेन विद विंग्स किस तरह से आपके साथ मिलके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और किस तरह से समाज के लिए सहयोग कर सकते हैं, बताइएगा. आई कैन जस्ट से वन थिंग. She is powerful not because she wasn't scared, but because she went so strongly despite the fear. So thank you so much, IPS Aparna Gautam, and you have today inspired so many people. ये इसकी recording लोग देखते रहेंगे. Thank you so much once again, and stay tuned with us. And next week again we'll come with another unique story of a powerful woman. Thank you so much.